वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एक्सेलेंसी IAS। दोस्तों, हम लोग फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे थे एंड टुडे दैट इज द पार्ट 2 एंड टुडे वी विल स्टडी द अबाउट द peculiar features, the very basic features with respect to the fundamental rights. We will talk about all the features in the detail in the today's class. This chapter is very relevant for your exam. Okay, so prepare it nicely that in today's class we will try to explore the different aspects with respect to the meaning of the fundamental rights. So without getting the delay too much, let's get start with our today's class. So now let us understand the difference between the fundamental rights and the legal rights. The first point क्या याद रखना है कि the fundamental rights constitution गारंटी करता है. It means it is guaranteed by the fundamental law of the land, the supreme law of the land, that is constitution. And legal rights क्या होता है? These are the protected and governed by the ordinary laws. What? These are the protected and guaranteed by the ordinary laws. इसका मतलब पार्लियामेंट अपने हिसाब से इसके प्रोविजंस को, इसके स्टेटस को चेंज कर सकता है, लेकिन द ऑर्डिनरी लॉ से हम लोग फंडामेंटल राइट्स को चेंज नहीं किया जा सकता है. सेकेंड थिंग, ये फंडामेंटल राइट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर. बेसिक स्ट्रक्चर एक अलग ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये हम लोग अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे. बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन 1973 में दिया गया था. इसमें ये कहा गया था कि दैट द कॉन्स्टिट्यूशन के उन प्रोविजंस को, देयर आर द सर्टेन फीचर्स, फंडामेंटल फीचर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको पार्लियामेंट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पावर के एक्सरसाइज से चेंज नहीं कर सकता है. ओके, इसको बेसिक स्ट्रक्चर बोला गया एंड इन बेसिक स्ट्रक्चर के प्रोविजंस को वायलेट नहीं कर सकता है. फंडामेंटल राइट्स बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है. इसका मतलब ऑर्डिनरी पीस ऑफ लेजिस्लेशन से इसको वायलेट नहीं कर सकते हैं, इसको चेंज नहीं किया जा सकता है. सो इसका मतलब द फंडामेंटल राइट्स के बारे में क्या याद रखेंगे? इट इज द गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. सेकेंड, इट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेज कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, क्या ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स फंडामेंटल राइट्स होता है क्या? ठीक है, सो देयर इज एन स्टेटमेंट. सो देयर इज ए स्टेटमेंट और असर्शन रीजन के क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स इंप्लाई द फंडामेंटल राइट्स, एंड सेकंड, ऑल द फंडामेंटल राइट्स इंप्लाइज द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स. ठीक है, फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है. सो क्या सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स फंडामेंटल राइट्स होते? नहीं. ठीक है, जैसे आर्टिकल 300A जो पहले क्या था? फंडामेंटल राइट्स था, बट नाउ व्हाट इज द स्टेटस? द स्टेटस इज लीगल राइट्स. तो ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है. इसका मतलब ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आर नॉट द फंडामेंटल राइट्स, बट ऑल फंडामेंटल राइट्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. यस, because all the fundamental rights are guaranteed by the Constitution of India. So thereby all fundamental rights are constitutional right. ये आप याद रखेंगे. Now friend, with respect to the legal rights, एक पॉइंट आप याद रखना कि these rights can be waived. इसको curtail किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, but fundamental rights are guaranteed. These cannot be waived. Clear? ये पॉइंट आप याद रखना. So let us move further and let us see some more concepts. So in the original constitutions, there were 7 fundamental rights, that is Article 14 to Article 32. These are equality, freedom, exploitation, freedom of religion, educational rights, and the right to property and constitutional remedy. So ये जो 6 point है, that is called right to property, and जो Article 31 में दिया गया था, and this right was abolished. अब कब ये abolish किया गया? It was done in the 1978 through the 44th Constitutional Amendment Act. ये important है, याद रखना. So the 44th Constitutional Amendment Act 1978 abolished the right to property and it was made a legal right under the Article 300A. So ये legal right इसको बना दिया गया है. So in toto, what is the current status of fundamental right? In nutshell, we can say that there are the 6 fundamental rights. And these 6 fundamental rights are the claims of the individual. These are the checks against the arbitrary actions of the states. So now let us see some of the important and peculiar features of the fundamental rights. So friend, the right to property को abolish कर दिया गया and total कितने अभी rights हैं? 6 fundamental rights. So कुछ rights के कुछ important features हैं, इसको हम लोग one by one सीखते हैं. That the fundamental rights, ये exclusive rights सारे individuals को एक समान नहीं दिया गया है.
सिटीजन्स को कुछ स्पेसिफिक राइट्स हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को दिए गए हैं, फॉरेनर्स को नहीं दिए गए हैं। सिटीजनशिप चैप्टर में भी हम लोगों ने देखा था कि व्हाट आर द राइट्स गिवन टू सिटीजन्स ओनली, इसको ट्रिक्स बताया था मैंने, दैट इज आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30। इसके अलावा क्या था, दैट फंडामेंटल ड्यूटीज, एमपीज, एमएलएज का पोस्ट, प्रेसिडेंट का इलेक्शन का पोस्ट, वो सारे सिर्फ सिटीजन्स ऑफ इंडिया को दिए गए हैं। सो फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 दीज आर ओनली गिवन टू द सिटीजन। 15 क्या था, दैट इज द जनरल प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन। 16 क्या था, दैट इज इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है। आर्टिकल 19 ये वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सिक्स राइट, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशंस, ये आर्टिकल 19 है। आर्टिकल 29 दैट इज व्हाट, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, ओके। एंड आर्टिकल 30 दैट इज माइनॉरिटी रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर करने का राइट, ये सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया को दिया गया है। इसके अलावा जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो फॉरेनर्स को भी एंड सिटीजन दोनों को दिया गया है, जैसे राइट टू इक्वालिटी दैट इज आर्टिकल 14, ये दोनों को दिया गया है। गेटिंग माय पॉइंट? सो ऑल वी विल टेक अप इन द डिटेल्स। सो इन नटसेल व्हाट वी कैन से दैट देयर आर द सिक्स फंडामेंटल राइट। अब शॉर्ट में कैसे आप याद रखोगे? सो इन शॉर्ट, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 दिस इज इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। 19 to 22 that is called right to freedom. 23 and 24 this is the freedom of against exploitations, ठीक है। then article 25 से 28 that is freedom of religion. 29 to 30 that is cultural and educational rights, and 32 this is the constitutional remedy, ठीक है। and article 31 of course it was the right to property and which was abolished, and what is the status? The status is the legal right. So now the first feature that is कुछ राइट्स सिर्फ सिटीजन्स को मिलते हैं और कुछ राइट्स टू ऑल, दैट इज सिटीजन्स प्लस फॉरेनर्स। एक्सक्लूसिव क्या है, दैट इज 15, 16, 19, 29 एंड 30, ये याद रखना। सेकंड फीचर इज दैट कुछ राइट दैट फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? दैट एब्सोल्यूट का मतलब दैट इज सुप्रीम, उसको कभी भी चेक्स नहीं किया जा सकता है, उसके ऊपर में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा सकता है। बट फॉर फंडामेंटल राइट्स क्या प्रोविजन है कि यस, रीजनेबल restrictions can be imposed by the states. रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। इसका मतलब फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं, ये क्वालिफाइड होते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है बाय द स्टेट, एंड ये जो रेस्ट्रिक्शंस है वो रीजनेबल है कि नहीं, ये कौन चेक करेगा? दैट इज बाय द सुप्रीम कोर्ट, दैट इज बाय द जुडिशरी। गेटिंग माय पॉइंट? एंड जुडिशरी विल सी द रैशनैलिटी बिहाइंड द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। यदि वो that is not reasonable है, then the Supreme Court can declare that as a null and void against the provisions of the constitutions. So second feature क्या है कि the fundamental rights are qualified, not absolute. इसका मतलब क्या है कि स्टेट उस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, बट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है कि नहीं वो कौन डिसाइड करेगा? इट इज डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। नाउ थर्ड पॉइंट इज अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एक्शंस ऑफ द स्टेट। इसका क्या मीनिंग हुआ? दैट स्टेट क्या होता है? What is the meaning of state? In the modern definitions already we have seen in the previous classes. State is a political term जिसमें territory, people, government, sovereign government, international recognitions, इसके 5 component है, and state is meant for a welfare state. Okay, Indian constitutions actually meant for a welfare state, and through the fundamental rights it actually want to promote a political democracy. ठीक है? Fundamental right ensures the political democracy. इसका मतलब द स्टेट्स आर्बिट्ररी एक्शंस नहीं ले सकता है, स्टेट्स इररिस्पॉन्सिबल एक्शंस नहीं ले सकता है, ठीक है। आर्बिट्ररी एक्शंस ऑफ द स्टेट्स के अगेंस्ट में ये चेक्स है। स्टेट्स तो काम करेगा ना फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, बट इट डू नॉट वायलेट द प्राइवेसी ऑफ द इंडिविजुअल, इट शुड नॉट वायलेट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल इनइक्वालिटी ब्रिंग नहीं करना। सो ये सारे एक्शंस जो हो टेकन बाय द स्टेट, इफ इट इज, देन दीज आर द चेक्स अगेंस्ट दोज एक्शंस। स्टेट्स कैन नॉट डू आर्बिट्ररी एक्शंस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फीचर इज नेगेटिव वर्सेस द पॉजिटिव कैरेक्टर। सो फ्रेंड, द फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? द फंडामेंटल राइट्स आर गिवन टू द सिटीजन्स एंड दीज आर द क्लेम्स गिवन टू द सिटीजन्स एंड अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एक्शंस ऑफ द स्टेट्स एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। ऑन द अनदर हैंड, स्टेट्स के ऊपर में क्या है? ये चेक्स है अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एक्शंस।
इसका मतलब एक तरह से सिटीजन्स को, इंडिविजुअल्स को वो प्रिविलेज प्रोवाइड कर रहा है। सो इस सेंस में इसको पॉजिटिव बोला जाता है। ओके, दैट फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड privileges to the citizens, to the individuals, empowering to the citizen, to the individual, इस सेंस में इसको पॉजिटिव बोलते हैं। एंड स्टेट्स के ऊपर में ये कैसा है, चिक्स है अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एक्शंस ऑफ द स्टेट, मतलब नेगेटिव एक्शंस ऑफ द स्टेट। दैट इज व्हाई इस सेंस में इसको नेगेटिव बोलते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? सो व्हाट इज द फोर्थ फीचर? दैट इज नेगेटिव वर्सेस पॉजिटिव कैरेक्टर। नेगेटिव का मीनिंग क्या हुआ? अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एक्शंस ऑफ द स्टेट, एंड पॉजिटिव का मतलब दैट प्रिविलेज ऑफ द सिटीजन। यहाँ पर जब भी फंडामेंटल राइट्स की आप बात करोगे तो दो चीज याद रखना। इन वन हैंड देयर आर सिटीजन, दैट इज इंडिविजुअल, ऑन द अनदर हैंड देयर आर स्टेट। स्टेट और इंडिविजुअल के बीच में हमेशा बात होती है फंडामेंटल राइट्स में। गेटिंग माय पॉइंट? कीप दिस पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। नाउ लेट्स मूव एंड टेक द फिफ्थ फीचर, दैट इज जस्टिसिएबल वर्सेस नॉन जस्टिसिएबल राइट्स। तो फ्रेंड्स, इन द प्रीवियस क्लासेस में हम लोग इस टॉपिक पे बात कर चुके हैं। What is justiciable? मतलब in case of the violation, the person can go to the Supreme Court or they can go to the Judiciary High Court. ठीक है? तो Supreme Court is called the guarantor and protector of the fundamental rights. तो कोई भी persons जिसका fundamental rights violate होता है, they can go to the Supreme Court and Supreme Court issue the writs for restoration of the fundamental rights. और कौन कौन से writs होते हैं हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे, but in short, these are habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari and quo warranto. They are the five called the writs. Habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari and quo warranto. इसका मतलब that in case of the violations, the fundamental rights are the justiciable rights, and in case of the violation, they are restored by the judiciary, restored by the Supreme Court through the issue of the writs. But on the other hand, the non-justiciable का मतलब क्या होता है, जिसमें कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी आएगा। ओके, इसका मतलब इन केस ऑफ द वायलेशन सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट डायरेक्टली इन्फोर्स इट। ठीक है, सो फंडामेंटल्स कैसा है, जस्टिसिएबल है, बट डीपीएसपी और ड्यूटीज कैसा होगा, नॉन जस्टिसिएबल। हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? सो रिस्टोरेशन के लिए कौन कौन से रिट्स हैं? हबीज कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्ट्यूररी एंड क्यो वारंटो। सो लेट्स टेक द नेक्स्ट फीचर। नाउ द नेक्स्ट फीचर इज द डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय द सुप्रीम कोर्ट। गेटिंग माय पॉइंट? That is why Supreme Court is called the guarantor and protector of the fundamental rights. थोड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लेते हैं। अभी हम लोगों ने जो बात करी कि in case of the violations of the fundamental rights, कोई भी पर्सन जिसका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, that person can go to the Supreme Court. Supreme Court वो डायरेक्टली जा सकता है। जनरली सुप्रीम कोर्ट जाने के क्या तरीका होता है? That first you go to the High Court and against the order of the High Court, यदि satisfied नहीं है, then you go and appeal in the Supreme Court. That is called appellate jurisdictions. But in case of fundamental right, the person can directly go to the Supreme Court, not by the appeal. ठीक है, डायरेक्टली जा सकता है। Even that fundamental right के protections के लिए High Court को भी दिया जाता है। It means that you are free that you can go to the High Court, or you are also free to you can go to the Supreme Court directly. But in some cases, High Court can deny. बट सुप्रीम कोर्ट कैन नेवर डिनाई, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट को क्या बोलते हैं? गारंटर एंड प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हाई कोर्ट भी जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, बट सुप्रीम कोर्ट नेवर डिनाई। सुप्रीम कोर्ट मस्ट इशू द रीट्स इन केस ऑफ वायलेशन फॉर इट्स रिस्टोरेशंस। ठीक है, हम लोग जब जुडिशरी पढ़ेंगे देन वी विल सी द स्कोप ऑफ द फंडामेंटल राइट, जुरिस्डिक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट with respect to High Court and Supreme Court. Now, here what is the point is that they are defended and guaranteed by the Supreme Court, and Supreme Court को क्या बोलते हैं? These are the guarantor and the protector of the fundamental rights. Getting my point? Let's move further. The seventh feature is not permanent or sacrosanct versus basic structure doctrine. The fundamental rights, ठीक है, these are not permanent rights. We have already talked about कि इस पे reasonable restrictions लगाया जा सकता है. Now, is the fundamental rights can be changed? What is the status? Yes, fundamental rights can be changed. This is the status. Although they do not violate the basic structure doctrine. ये basic structure क्या है? एक अलग separate topic है. For the time being, you remember that fundamental rights are also not permanent. They are not also sacrosanct. उनको amend किया जा सकता है by the parliament through a special machinery, that is through Constitutional Amendment Act. ऑर्डिनरी पीस ऑफ लेजिस्लेशन से उसको अमेंड नहीं कर सकते। ठीक है, रिकॉल इन ए क्विक
दैट आर्टिकल 368 दो तरीका प्रोवाइड करता था, दैट इज स्पेशल मेजोरिटी प्लस कंसेंट ऑफ द स्टेट, ठीक है, और एक तरीका होता था जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते थे, दैट इज बाय द सिंपल मेजोरिटी। सो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के टोटल कितने तरीके होते हैं? देयर आर द थ्री वेज, दैट इज आर्टिकल 368 टू वे प्रोवाइड करता है, दैट इज स्पेशल मेजोरिटी प्लस कंसेंट ऑफ द स्टेट, और एक होता है जो सिंपल मेजोरिटी से, जो आर्टिकल 368 के बाहर होता है। सो इट मींस द स्पेशल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी ऑफ कंसेंट ऑफ द स्टेट्स के थ्रू ही हम लोग फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? सो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, और सेकंड थिंग ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही किया जा सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर दैट फंडामेंटल राइट आर नॉट आल्सो परमानेंट, दे कैन बी अमेंडेड, but they can be amended through a special majority through a constitutional amendment act with a special majority, and second point, to the extent वो basic structure doctrine को violate नहीं करेगा। Getting my point? Now let's move further. Now friend, one of the very important feature that is suspension during the national emergency. Okay, national emergency याद है? Emergency, how many types of emergency? That is called national emergency. That is article 352, article 356 and article 360. So it talks about national emergency, it talks about the president rule, and it talks about the financial emergency. So national emergency basically दो criteria होते हैं, और that is war plus external aggressions and armed rebellions. Now friend, if national emergency is imposed on the ground of war and external aggression, that is called external emergency, then fundamental rights are restricted, ठीक है, the suspended, and except the article 20 and 21. 2021 के अलावा सारे राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है। विथ रेस्पेक्ट टू आर्टिकल 19, वेरी पिकुलियर, आप याद रखिएगा, आर्टिकल 19 प्रोवाइडेड फॉर 6 राइट्स, और 6 राइट्स को सस्पेंड तभी कर सकते हैं जब वो एक्सटर्नल इमरजेंसी है। इन केस ऑफ इंटरनल इमरजेंसी आर्टिकल 19 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? सो व्हाट इज द थिंग दैट इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21. That is 21 is right to life and personal liberty, and what is article 20? A protection against arrest and detention, and article 19 provided for 6 right, ये भी यहाँ सस्पेंड किया जा सकता है। बट इन केस ऑफ इंटरनल इमरजेंसी द 6 फंडामेंटल राइट्स को हम लोग सस्पेंड नहीं कर सकते हैं, इट कैन नॉट बी सस्पेंडेड। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ these features are very peculiar and important. That is first one, scope of operations. Scope of operations का मतलब that what is the concept? That there is a fundamental rights, that states will take actions, and if it violates the fundamental right, then Supreme Court or judiciary इसको क्या बोलेगा? Null and void. Getting my point? This is the basic thing. Now, what is the scope of operation? That is article 31A, 31B and 31C. 31A it talks about कि कुछ laws है जो acquisition of states हैं, किसी के property उसको state के acquisitions के लिए state किसी purpose के लिए acquire करता है। आर्टिकल 31B इट टॉक्स अबाउट कि स्टेट्स कुछ लॉज या रेगुलेशंस को 9th शेड्यूल में इंसर्ट करता है, और आर्टिकल 31C एक्चुअली टॉक्स कि स्टेट्स कुछ एक्शंस लिया दैट गिव टू इफेक्ट द एनी प्रोविजंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। 3 पॉइंट आप याद रखिएगा, आर्टिकल 31A फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट, 31B that laws included or regulations included under the 9th schedule. 9th schedule क्या था? लैंड रिफॉर्म्स, एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी, याद है कुछ। 31C that is to give effect to certain provisions of DPSP, ये तीनों काम करता है, then that would not violate the provisions of the fundamental rights. ये इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है कि इन केस ऑफ इन सिंपल यदि करेगा तो क्या होगा? इट विल वायलेट द फंडामेंटल राइट्स। बट यदि स्टेट के एक्विजिशंस के लिए कोई लॉ 9th शेड्यूल के में इंक्लूड करने के लिए, या फिर DPSP को to give effect certain provisions of DPSP, उस तरह के लॉ इनवैलिडेट होने से बच जाता है। ओके, दैट विल नॉट गोइंग टू वायलेट द फंडामेंटल राइट्स। गेटिंग माय पॉइंट? ये फर्दर क्लैरिफाई होगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दैट आर्टिकल 33, 34 and 35. What is this? The limitations to armed forces and that martial law, and that is self-executory nature. Article 33 it simply say that limitations to armed forces, मतलब the parliament the fundamental right for the paramilitary forces, some intelligence agency, analogous services, armed forces, इन सब के केसेस में कुछ फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, एब्रोगेट कर सकता है। दैट इज द आर्टिकल नंबर 33। इन केस ऑफ आर्म फोर्सेस देयर इज अ लिमिटेशंस टू फंडामेंटल राइट, और वो कौन कर सकता है? दैट इज द पार्लियामेंट। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ मार्शल लॉ एंड
in the limitations. What is the martial law? So martial law is basically the military rule. And why this military rule? Military rule is to restore the order. ठीक है? So public order के लिए the military rule या martial law impose किया जा सकता है. एक चीज याद रखिएगा, in the constitutions martial law is nowhere mentioned. मार्शल लॉ कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. सो मार्शल लॉ सिंपली मीन इट इज द मिलिट्री रूल टू रिस्टोर द ऑर्डर और पब्लिक ऑर्डर, एंड ड्यूरिंग दिस टाइम ऑल्सो द फंडामेंटल राइट्स आर रेस्ट्रिक्टेड. क्या होता है? द फंडामेंटल राइट्स आर रेस्ट्रिक्टेड. गेटिंग माई पॉइंट? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड आर्टिकल नंबर 35. इट मीन्स द फंडामेंटल राइट जो भी होते हैं दे जनरली मोस्ट आर सेल्फ एग्जीक्यूटरी. सारे अपने आप, मतलब with the executions, with the implementation of the constitution, the fundamental rights are self-executory. But कुछ fundamental rights हैं जिनको पार्लियामेंट थ्रू द enactment of the law उनको भी execute कर सकता है. इनका मतलब दोनों ही enabling है. One that is called ultimate law of the land, that is fundamental law of the land, जिसको self execute करता है, that is called highest authority. And कुछ provisions जो enabling होने चाहिए, those are enforced, these are enacted by the subsequent legislations of the parliament. Getting my point? So Article 33 limitations to the armed forces, paramilitary forces, intelligence agency, उसको parliament restrict कर सकता है, abrogate कर सकता है. Article 34 that in case of the martial law that fundamental rights can be restricted. Martial law क्या होता है? It is a military rule to restore the order, and martial law is nowhere mentioned in the constitutions. And article number that is 35 that is self-executory nature of the fundamental rights. The fundamental right automatically execute हो जाएगा. All right, friends, I hope all of you are getting. So, in nutshell, what we can say that fundamental rights, these are the checks and the balances. These are the claims by the individual. These are the not permanent, rather they are qualified. They are subject to reasonable restrictions by the state. लेकिन reasonable restrictions है कि नहीं, that will be decided by the judiciary. The fundamental rights are not sacrosanct. They are not the permanent. The fundamental rights are the positive versus negative. Negative in the sense कि arbitrary actions of the states के against में ये checks है. Second, that Supreme Court is called the guarantor and the protector of the fundamental rights. The aggrieved person can directly go to the Supreme Court. Okay, so fundamental rights are mentioned, are enshrined in Part 3 of the Constitution, and this is called the Magna Carta of India. Getting my point? So friend, let us take the two important topic of the day, that is the definition of the state and definition of the laws. So Article number 12, which basically defines the state for this purpose. ये स्टेट और सिटीजन के बीच में बात हो रही है. सो स्टेट किसको बोलेंगे? दैट एक्चुअली डिफाइंस बाय आर्टिकल नंबर 12 फॉर दिस पर्पस. ये डिफाइन करता है कि आर्टिकल 12 डिफाइंस द स्टेट एज दैट स्टेट मींस द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, एनी लोकल अथॉरिटी, ऑल अदर अथॉरिटीज either statutory, non-statutory, which are funded and acts as an instrument of the government, all comes under the definition of state. State is a broader term है. क्या है ये? पार्लियामेंट मतलब लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन. इट ऑल्सो इंक्लूड लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट्स. कोई भी लोकल अथॉरिटी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, म्युनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ओके, दैट एनी अदर अथॉरिटी, लेट्स से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द कोल इंडिया लिमिटेड, लाइक दैट ONGC, लाइक NTPC जिसमें गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग हो, वो सब स्टेट्स के डेफिनेशन के अंदर आता है. फर्दर द सुप्रीम कोर्ट ने इसके डेफिनेशंस को और वाइडर कर दिया. बोला कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट काम करे, वो भी डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स में आएगा. फॉर एग्जांपल, जैसे कि रोड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में जो स्टेट बसेस चलती हैं, जो लोग दिल्ली में रहते हैं, दैट इज कॉल्ड DTC बसेस जो चलती हैं, वो भी यदि आपके कोई फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, देन यू कैन गो एंड अपील इन द कोर्ट. Okay, court will issue the writs for the restoration of the fundamental rights. Getting my point? So article number 12 provide a broader definition which includes the legislature and executive of union, states, local authorities, any of the organization, statutory, non-statutory, और कोई भी organization जो state के instrument की तरह काम करता है, agency की तरह काम करता है, उन सब को states के अंदर रखा जाता है. और वो सारे ऑर्गेनाइजेशंस यदि कोई एक्शंस लेता है विच इज इन द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट, इन द वायलेशंस ऑफ द फंडामेंटल राइट, देन द पर्सन कैन गो टू द कोर्ट. ठीक है, एंड द कोर्ट विल रिस्टोर थ्रू द इशू ऑफ रिट्स. गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज द आर्टिकल नंबर 12. नाउ लेट अस टेक द आर्टिकल नंबर 13. आर्टिकल नंबर 13 बेसिकली डिफाइंस द टर्म लॉ. ओके, कोई भी लॉ आर्टिकल नंबर 13 से डिफाइन करता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस
the part 3 of the constitutions. इसमें से दो जो the most important point is the power of the judicial review. What is the judicial review? The judicial review is the power of judiciary जिसके थ्रू वो कोई भी लेजिस्लेटिव ऑर्डर, लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक करता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट कि व्हाट इज दिस कि अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एक्शंस ऑफ द स्टेट. सो स्टेट कोई आर्बिट्ररी एक्शंस ले रहा है कि नहीं, सो दैट विल बी डिसाइडेड थ्रू द एक्सरसाइज ऑफ द जुडिशियल रिव्यू. एंड व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द जुडिशियल रिव्यू का पावर सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट को अंडर आर्टिकल 226 दिया गया है. सो दोनों याद रखिएगा, अंडर आर्टिकल 32 टू द सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 226 टू द हाई कोर्ट द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज गिवन. गेटिंग माय पॉइंट. सो द लॉ जो डिफाइन करते हैं कि कौन सा लॉ वायलेटिंग होगा, कौन सा लॉ दैट इन द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. सो लॉ का भी एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट दिया गया है. सो अंडर द आर्टिकल 13 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ. लॉ का मतलब इतने सारी चीजें होती है, दैट इज परमानेंट लॉ, टेम्पररी लॉ, स्टैट्यूटरी लॉ, कोई भी नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेस ऑफ लॉ. इसको समझते हैं. परमानेंट लॉ का मतलब कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर बनाता है, विच इज द कार्डिनल फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेचर. टेम्पररी लॉ का मतलब ऑर्डिनेंस को भी उनको टेम्पररी लॉ बोला जाता है. सो द टेम्पररी लॉ ऑर्डिनेंस कौन प्रोमलगेट करता है? इट बाय द प्रेसिडेंट और द गवर्नर. स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट एक टर्म आएगा दैट इज कॉल्ड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. इसको क्या बोलते हैं? सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन. हम लोग पार्लियामेंट के चैप्टर में पढ़ेंगे. इसका मतलब लॉज आर ऑल्सो मेड बाय द एग्जीक्यूटिव्स. ओके, एग्जीक्यूटिव लॉ नहीं बनाता है. इसका प्रिंसिपल ऐसा है कि द स्केलेटन, द स्ट्रक्चर विल प्रोवाइडेड बाय द पार्लियामेंट बिकॉज पार्लियामेंट इसका प्रेरोगेटिव है, एंड मसल्स एंड द प्रिंसिपल्स आर एक्चुअली फीड बाय द एग्जीक्यूटिव्स. उस तरह के लेजिस्लेशन को क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन. These are called delegated legislation because the power of law making is delegated to the executives. That is why they are called delegated legislations. So law also incorporates the delegated legislation. Also customary laws भी इसमें आते हैं. मतलब any of the customs जिसके पास usage of force हो, instrument of force हो, उसको भी law के अंदर रखा गया है. Initially जो constitutional amendment act जो था, इसको लॉ के विद इन नहीं रखा जाता था, अंडर आर्टिकल नंबर 13 के प्रोव्यू में नहीं रखा जाता था. बट इन द केस ऑफ नंदा भारती केस इन द 1973 व्हेन द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वाज गिवन, द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आल्सो कम विद इन द प्रोविजंस विद इन द प्रोव्यू ऑफ आर्टिकल नंबर 13. Okay, and it will not violate the basic structure of the constitution. We will see in the subsequent part. So the law term, why it is defined? Because that any of the actions of the state is done through the law, by the parliament is done through the law, and law will infringe or not. इसलिए law को define करना बहुत जरूरी है. So law will include the permanent law, law made by the parliament, that will include the temporary law, that is called ordinances. That law would include also the delegated legislation, that is called statutory action. That would also non-statutory, मतलब customary laws, traditional laws. It will also include the Constitutional Amendment Act, which is also a law, until and to the extent it will not violate the basic structure doctrine. Getting my point? So article number 12 and article 13, it defines the state and the law for the purpose of part 3, and part 3 is, that is from article number 14 to article 32. It actually talks about the fundamental rights in the detail, and article 33, article 34 and article 35, it actually talks about the different provisions with respect to limitation of its operation, with respect to the scope of its operations. Getting my point? So friend, this is the first part, that is the basic and introductory things. You have to remember all these aspects, because one thing you remember about the polity, that in this book there are the few important chapters जिसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है. That is first one is the fundamental rights, okay, including the DPSP plus duty. Second is the parliament chapter. Third is the judiciary, and under that judiciary you Supreme Court chapter. Then you have to read the center-state relations, and then there is a local government. These are the 5 chapters which are very important. They are the lengthy bhi hai, but very conceptual. These are the pillars of this textbook. So this is the first part of the fundamental rights. We will take up the rest of the details in the subsequent lecture, and next of the features we will take up the subsequent part. So friend, we are concluding the lecture here, and today we have understood some basic aspect with respect to the fundamental rights,
and some of the important peculiar features with respect to the fundamental rights. आपको क्या क्या पॉइंट याद रखना है? You remember all those points. यहाँ पर आपको कुछ important articles याद रखने पड़ेंगे. You have to remember it, but provided in the context what we are dictating in the class. Then along with the class you read the textbook. It will help you to cope up with the concept, because इस chapter को आपको thoroughly समझना है. Getting my point? Last but not the least, I am repeatedly urges to those that who have missed the previous classes, please complete the previous lectures. Otherwise, the further lectures would be little bit difficult to understand you, because all the things would be conceptual. And if you gone through the previous classes, it would be empowering. It would be interesting to all of you. We are taking our effort to make the classes as simpler as possible, but the most important thing is that we have committed that we will provide the lectures for the civil services examination. So that is why we have to maintain the level that is required for your exam, and little bit more even itself. So that is why that would be the justice to all of you. So have patience, keep study, be studious, be determined to your exam, read the textbook along with the classes, and we would continuously enthuse, empower, and bring up the confidence throughout the video classes. So last but not the least, you should stay safe, stay healthy, have a nice day.